Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about the application of the Nernst equation. And in last video we will discuss about the Nernst equation, and today we will discuss about the application of the Nernst equation. First of all, by the help of Nernst equation, we can calculate the EMF of the cell. First, by help of the Nernst equation, we can calculate the EMF of cell. By help of Nernst equation, we can calculate EMF of the cell, yani E cell, and we know that E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Kc. Here R constant, T temperature, F Faraday, then E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log Kc, and the Kc is the equilibrium constant, and the N, here N, number of electrons in cell reaction, and the Kc, equilibrium constant. Clear है? And the E naught cell, EMF of cell in standard condition. So, by the help of Nernst equation, we can calculate the EMF of the cell. E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log Kc, or E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log Kc. And first, E cell हमने calculate किया है, and the second, second application of the Nernst equation is we can calculate the electrode potential by help of Nernst equation. We can calculate electrode potential. As example, first, suppose M plus N electron and AQ is equals to M solid. Clear? And the electrodes on take place at reduction, इस electrodes पर reduction हो रहा है. Apply Nernst equation on this reaction. So E M plus N to M is equals to E naught M plus N M minus 0.0591 upon n log
Kc, log Kc is equals to होता था product upon reactant concentration and solid concentration upon m plus n concentration, and we know that m solid concentration is equals to 1. So E m plus n m is equals to E naught m plus n m minus 0.0591 upon n log 1 upon m plus n concentration. Clear है? या E m plus n m solid is equals to E naught m plus n m minus 0.0591 upon n plus log m plus n concentration. तो हम नर्स्ट इक्वेशन से हम कोई भी इलेक्ट्रोड हो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है? तो यह है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया. फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के लिए करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम बात करें तो देखो कैसे करेंगे. For hydrogen electrode, then we know that H plus electrons is equals to half H2 gas at 180 pressure. Apply Nernst equation. E H plus H2 is equals to E naught H plus H2 minus 0.0591 upon n log H2 concentration power half upon H plus concentration. Yet we know that hydrogen at 1 atm concentration is equals to 1. So these reactions we can written as E H plus H2 is equals to E naught H plus H2 minus 0.0591 upon n log 1 upon H plus concentration. Clear है? And E naught H plus oblique H2 is a standard electrode potential of hydrogen gas, and we know that standard electrode potential for hydrogen is equals to 0.0 volt. So, and this equation we can written as H plus H2 is equals to 0 minus 0.0591 upon n, and the n number of n is equals to 1. So 1 and the log 1 upon H plus concentration. Clear? And next for hydrogen gas, इस इक्वेशन से हम हाइड्रोजन अब जी इसको हटा सकते हैं हम,
तो ये वैल्यू किसमें है, माइनस में। अब हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट नेगेटिव लॉग H प्लस इज इक्वल्स टू pH। क्लियर है? तो मैं क्या कर सकता हूं, E H प्लस H2 इज इक्वल्स टू माइनस है माइनस 0.0591। इस टर्म्स को क्या ले लेते हैं, माइनस नेगेटिव लॉग H प्लस, नेगेटिव लॉग H प्लस। क्लियर है? एंड वी नो दैट नेगेटिव लॉग H प्लस इज कॉल्ड pH। क्लियर है? तो बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन we can calculate the pH of the cell। क्लियर है? एंड द H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस pH। क्लियर है? तो हम हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड्स है उसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मान लो सपोज करो आपसे ये कहे कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशंस में H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू है 10 की पावर माइनस 8। तब आपको कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करोगे, फॉर्मूले में E H प्लस H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। pH क्या हो गया, 8। क्लियर है? तो 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन में सेकंड, बाय हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? एंड द थर्ड is calculate the equilibrium constant। Third is equilibrium constant। equilibrium constant Kc from Nernst equation। Nernst equation एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर है? तो वी नो दैट Nernst equation is E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log Kc, and this equation is a Nernst equation, and the equilibrium constant from Nernst equation we can calculate, and this equation is first, we know that at equilibrium E cell is equals to 0, because at equilibrium both electrodes concentration is equal, so E cell equals to 0 at equilibrium
E cell equals to 0, तो 0 is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log Kc. क्लियर है? एंड ये टर्म इस साइड आएगा, E naught cell माइनस में हो गया इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc, and we know that minus minus cancel, so E naught cell is equals to 0.0591 upon n log Kc, and log Kc is equals to E naught cell into small n upon 0.0591. So this equation is second, and this equation show relationship in between the equilibrium constant Kc and the E naught cell, यानी Am of the cell. क्लियर है? या फिर आप इसको ये लिख सकते हो Kc is equals to anti-log E naught cell into small n upon 0.0591. क्लियर है? यानी जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटीलॉग जो होगा वो किसके इक्वल होगा? Kc का. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द इक्वेशन 2 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है? अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. यानी मैं आपसे पूछूं कभी E नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, तो E नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc होता है. क्लियर है? थर्ड एप्लीकेशन and fourth application is electrochemical cell and gives energy of the reaction. Electrochemical cell and gives energy of the reaction. Gives energy of the reaction. This gives energy of the reactions. We know that work done W is equals to NF E naught cell. Clear? And del G is equals to minus W, and del G equals to minus NF E naught cell, and standard condition. Clear? In standard conditions, to gives energy of the reactions, electrochemical cell and the gives energy of the reactions, we know that del G naught equals to minus NF E naught cell, and we know that E naught cell in equilibrium
is equals to 0.0591 upon n log Kc। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E नोट सेल इज इक्वल्स टू RT ln Kc अपॉन NF। क्लियर है? ए नोट सेल जो वैल्यू है, पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। सो डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ। ई नोट सेल की वैल्यू क्या है? आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। क्लियर? एन एफ से एन एफ कैंसिल, तो डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी। क्लियर? And we know that ln is equals to log base 10 ln is equals to 2.303 log base 10. So del G naught is equals to minus 2.303 RT log base 10 Kc। क्लियर? एंड दिस, ये रिलेशनशिप आया here del G naught it gives energy of the reactions of the cell reaction in standard condition, and Kc is equals to equilibrium constant। क्लियर है? या इसी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूं, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ वो है, आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। क्लियर? एंड फिफ्थ इज फोर्थ हो गया, फिफ्थ ये फॉर्मूले आपको याद रखें। Nernst equation for galvanic cell. We know that cell reaction of galvanic cell is zinc solid plus copper plus 2, concentration is equals to zinc plus 2 concentration plus copper solid। क्लियर? ये गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। E cell is equals to
ए नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केस। तो इस इक्वेशन पे ही अप्लाई कर दो। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन एंड कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन एंड द कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन। एंड वी नो दैट सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिट होती है, तो इट मींस जिंक सॉलिड कंसंट्रेशन इज इक्वल होगा कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1। सो दिस इक्वेशन इज E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log zinc plus 2 concentration upon copper plus 2 ion concentration. For galvanic cell, या इसी को बोलते हैं डेनियल सेल, n is equals to 2. So E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n। अच्छा, ये अप और ये डाउन हो जाएगा, तो इट मीन्स ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो प्लस कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन। And this reaction Nernst equation for the galvanic cell। अब आपसे सपोज करो बोले कॉपर प्लस 2 जो है उसकी कंसंट्रेशन है 0.001 एंड जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 0.1, तो ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दो और ई सेल की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन होगी। क्लियर है? या फिर ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इससे कैलकुलेट कर सकते। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन।